Hello. So in this lecture we are going to prove this theorem. I have already given you the elaboration or the interpretation of this theorem, and I am not repeating that now. I'll be only proving. I'll be more concerned with the proof now. और जैसा मैंने कल ही आपसे कहा था, we have to prove this in cases. We need to consider. आपको स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है? Yes, sir. Okay. Proof. To prove this, we consider cases. Case 1. Basically, we have to consider 5 cases. The 5th case will be the most general case. और इसमें ऐसा है कि you cannot take jumps. Basically, case 1 will be used to prove case 2nd. Case 2nd will be used to prove case 3rd. So you cannot take jumps here. And the logical sequencing of these cases also matters, because as I already told you, case 1st will be used to prove case 2nd, case 2nd will be used to prove case 3rd. Okay, so the sequencing, the in the case 1st, we'll be considering the scenario when this E is a simmering member, and E is a simmering. And here by simmering I mean the product simmering, and E is a simmering member. Full stop. Now that it's a simmering member, so it must be of the form A cross B. So मैं वही कर रहा हूँ. Let E be equal A cross B, where A and B are coming from the respective simmerings. A is coming from S and B is coming from the simmering on Y, which is sigma. Full stop. अब ये देखिए, for each x in X, you consider this, you consider the X section of E. Now what will be this X section? We'll basically classify here. We'll make classification based on this X. There are 2 possibilities. Either this X is coming from A, or X is not coming from A, right? In that case, it's coming from the complement of A. ठीक है? A is a part of X. A is a subset of X. Little x is a point of X. So there are 2 possibilities. Either this little x is a point in A or outside A. Now if it is outside A, what will be the X section of E? Remember that E is A cross B. क्या आ सकता है इसमें कोई पॉइंट X सेक्शन में इस केस में? If there is some point Y in the X section, it means what? It means, actually, by the definition of X section, it means the ordered pair X comma Y, it belongs to E, right? And what is E in this case? E is A cross B. ठीक है? So that means what? That means X is coming from A. So Y belongs to E sub X automatically means that X is coming from A.
So that means if there is no x in, I should say, if the x is not coming from A, in that case there cannot be any y in the E sub x. So in this case, this E sub x is actually the empty set. It's empty. And what about this case? अब फिर से इसी को, ये जो मैं यहाँ ये साइड में ये जो लिख रहा हूँ, इसी को देखिए आप. Y in E sub x means xy belongs to E. E is A cross B. So that means Y is in B. So Y has to be in B. And converse is also obvious. If X is coming from A, Y is coming from B, then the ordered pair XY must be coming from A cross B, which is E. So that means Y is coming from the E section, Y is coming from the X section of E. Right? So basically, when X is coming from A, the X section of E, which is A cross B, will be actually B in this case. So these are the two possibilities for this X section. ठीक है, तो ये होगा X section of E. It will be B when X is in A, and it will be empty set when X is outside A. And in each of these cases, चाहे ये हो या ये हो, in either case, it's a measurable set. है ना? It's a measurable set in the measure space Y sigma nu. Because B जो है, it is coming from the semi-ring of the measure space Y sigma nu. So it's obviously measurable. And empty set is also measurable. So therefore, E sub x is a measurable set. Full stop. Since both B and the empty set are nu measurable, it follows what? It follows E sub x, the x section of x, is nu measurable for which x's? In this case, the answer is for all x's. Is nu measurable for, because this thing happens for each x. ये मैंने यहाँ ही आपको दिखाया, इसमें x कोई भी x हो सकता है. So this is true for all x's in x. Now you compare this with the first conclusion of the theorem, the first part of the conclusion. The first part of the conclusion is E sub x, x sections are nu measurable subsets of y for almost all. हमें वहाँ जो है ना, हमें इससे एक बेहतर चीज़ मिल रही है. हमें मिल रहा है E sub x's are nu measurable for all x's. So we have proved this in this case. First holds in this case. जो वहाँ ऊपर आप conclusion में ये first देख रहे हैं ना, this holds in this case. So ये हो गया. अब इसके बाद we'll turn our attention to this, the function which takes x to the nu star of E sub x. मैं आपको दिखाऊंगा, this is an integrable function. Now, yeah, next आप लिखिएगा, not now. Now से नहीं आ रहा है. Next, we'll consider this. We'll consider the nu star, the outer measure of this E sub x. What will be this?
E sub x is b or phi. So nu star E sub x will be nu star b when x is in A, and it will be nu star phi when x is not in A, outside A. ठीक है? And this is same as, now B is a simmering member, और simmering members के लिए outer measure and measure they are same. So this is same as nu of B when x is in A, and nu star of the empty set का जो outer measure होता है it's 0. It is 0 when x is outside A. ठीक है? तो ये है it's nu of B और 0. और because of this, जिस तरह की इसकी ये शक्ल आ रही है, I can also write it like this. आप देखिए, I can also write it like this. I can write it as nu of B times the characteristic function of A evaluated at x. आप देखिए, आप चेक करिए इसे. If x is coming from A, characteristic function will be 1, so therefore it will be nu of B, जैसा कि ऊपर है, जैसा कि होना चाहिए. It should be nu of B when x is coming from A. And if x is not coming from A, in that case characteristic function will be 0. So therefore this will be nu of B times 0, which is 0. और ऊपर भी वही आप देख रहे हैं. When x is outside A, it is 0. So इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. Now you examine this. इसको कोई नहीं, लेबलिंग हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये इट्स अ लेंथी प्रूफ इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट इसमें चूँकि केसेस है, 5 केसेस है, तो ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट द प्रूफ टू बी लेंथी. तो अभी हम कोई लेबलिंग नहीं करेंगे. हम लेबलिंग सिर्फ वहाँ करेंगे वेयर इट इज़ ना अटमोस्ट नेसेसरी, जहाँ और कोई सूरत नहीं है. यहाँ फिर भी मैं मैनेज कर सकता हूँ इसे. So अभी हम ये देख रहे हैं, this nu star E sub x is equal to this thing. Now we'll actually use this fact. The outer measure nu star E is less than infinity. Now we are basically considering which is. हम यहाँ इस theorem में जो E है, it's a measurable set with finite outer measure. अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे. मैं यही लिख रहा हूँ since, और अभी आप पहले थोड़ा सा वेट करेंगे. म्यू क्रॉस न्यू स्टार जो है of E, by our assumption we know that it's a finite quantity. ठीक. Now I can also write it as, what is E? E is A cross B. So this is same as mu cross nu star of A cross B. And A cross B being a simmering member, product simmering member, इसके लिए क्या होगा? Outer measure will be same as the measure. So this will be same as mu cross nu evaluated at A cross B. And by definition, what is mu cross nu evaluated at A cross B? ये कल हमने देखा था. This is mu of A times nu of B. So ये है mu A times nu B is a finite quantity. It's a finite quantity. So it follows what? It follows, now that it's a finite quantity, ये कट शॉर्ट करके लिख रहा हूँ. हालांकि इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ है, लेकिन मैं आपको ज़बानी बताऊँगा. ठीक है? This is a finite quantity. Product of these two quantities is a finite quantity. तो यहाँ से आप मुझे क्या बता सकते हैं? You are given that this product is finite. अब being mathematics students, आप यहाँ से मुझे क्या बता सकते हैं?
क्या क्या सिचुएशन यहाँ पॉसिबल है? देखिए, एक सिचुएशन ये है कि बोथ द क्वांटिटीज आर फाइनाइट, जिनका ये प्रोडक्ट है ना, म्यू ए म्यू बी। एक सिचुएशन ये भी है, बोथ आर फाइनाइट। कोई और सिचुएशन पॉसिबल है यहाँ? जीरो वाली सिचुएशन। ज़ीरो वाली सिचुएशन थोड़ा कुछ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे ज़्यादा, या बस? म्यू ऑफ ए इज जीरो और म्यू ऑफ बी इज जीरो। नहीं, वो भी तो फाइनाइट कैटेगरी में ही आएगा ना। एक जो है ना, एक जो सिचुएशन है या एक पॉसिबिलिटी मैंने खुद ही बताई आपको, बोथ म्यू ए एंड न्यू बी आर फाइनाइट। अब जीरो भी तो फाइनाइट केस में ही आएगा। आपको उसको, वन इज इनफिनिट एंड हाँ ये है, दिस इज द आंसर। एक पॉसिबिलिटी ये है, सपोज दिस इज इन्फिनिटी एंड दिस इज जीरो, या ऐसा भी हो सकता है दिस इज जीरो एंड दिस इज इन्फिनिटी। If both are finite, then we have no issue. If both are finite, then this is a stuff function. ठीक है ना? अगर दोनों फाइनाइट है, then this ये जो यहाँ ये आप देख रहे हैं, it's a stuff function. And stuff functions are integrable. So this जो left side में जो आप object देख रहे हैं, it will be integrable. The object on the left side is nu star e sub x. So nu star e sub x will be integrable if both are finite. नाउ प्रॉब्लम असल में यहाँ होगी व्हेन वन इज इन्फिनिटी एंड अनदर इज जीरो, और इसमें असल में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो म्यू ए इन्फिनिटी होगा और न्यू बी जीरो। देखिए अगर एक इन्फिनिटी है ना, दूसरा नॉन जीरो नहीं हो सकता, वो पहले आपने समझना है। अगर सपोज म्यू ए इन्फिनिटी है, जो न्यू बी है वो नॉन जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज नॉन जीरो टाइम्स इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, विच इज नॉट द केस, द प्रोडक्ट इज इवेंचुअली फाइनाइट। सो अगर एक इन्फिनिटी है, दूसरा नेसेसरीली जीरो होना चाहिए। ठीक है, लेट्स फर्स्ट कंसिडर दिस व्हेन म्यू ए इज इन्फिनिटी एंड न्यू बी इज जीरो। ठीक है, तो यहां मुझे बताइए क्या मिलेगा आपको। न्यू बी इज जीरो, इफ न्यू बी इज जीरो, यहां से आप मुझे क्या बता सकते हैं, व्हाट विल बी दिस फंक्शन? इट विल बी a zero function, rather the zero function, and zero function is again integrable. So in this case also we are okay. What about this situation when mu a is zero and nu b is infinity? Now mu a is zero, measure of a is zero, so that means this characteristic function is a function which is zero a, because characteristic function a जो है ना, it will be non-zero in a, और अगर a का ही measure zero है, so means this function is zero a, so this is zero function. और ये infinity है, but in measure theory हमने पहले ये decide किया है कि zero times infinity will be zero, so again it will be a zero function, rather the zero function. ठीक, so यहाँ असल में तीन possibilities है, both finite, दूसरी possibility है म्यू ए इन्फिनाइट एंड न्यू बी ज़ीरो, तीसरी पॉसिबिलिटी है म्यू ए ज़ीरो एंड न्यू बी इन्फिनाइट, और तीनों पॉसिबिलिटीज़ में हम देख रहे हैं कि द फंक्शन इज इंटीग्रेबल। अगर दोनों फाइनाइट है, इस केस में इट विल बी अ स्टफ फंक्शन, नॉन ज़ीरो स्टफ फंक्शन बेसिकली, या आई कैन नॉट से नॉन ज़ीरो स्टफ, उसमें भी कुछ है, अगर दोनों ज़ीरो होंगे तो उस केस में भी ये ज़ीरो होगा, इट विल बी अ स्टफ फंक्शन। और दूसरे जो वो जो हमें लग रहा है कि प्रॉब्लमेटिक केसेस है, वहाँ भी कोई मसला नहीं है एक्चुअली, वहाँ ये जो फंक्शन इट विल बी द जीरो फंक्शन, एंड जीरो फंक्शन इज इंटीग्रेबल, सो देयरफॉर इट्स ऑलवेज एन इंटीग्रेबल फंक्शन। इट फॉलोज, nu star e sub x is an integrable function
मैंने कल ही आपको बताया था इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स. इफ यू चेंज एक्स द एक्स सेक्शन विल चेंज, सो देयरफॉर द न्यू स्टार विल चेंज. सो इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स. और इसी फंक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ. इट्स एन इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर विच मेजर स्पेस. इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो इट्स इंटीग्रेबल ओवर एक्स एस, द इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर एक्स एस में. तो ये भी हो गया. और वो इसके बाद जो है ना वो भी इसी में हम, क्योंकि उसमें अभी यही डिटेल्स है एंड आई डोंट वांट टू गो टू दीज ट्रिवियल डिटेल्स एक्चुअली. वो मैं इसको इसी में लिख रहा हूँ. एंड now that it's integrable, so I can speak about the integral. I can speak about integral over x nu star e sub x d mu. The question is, what will be the integral? If it is the scenario where both mu a and mu b are finite, then in that case this integral will be integral of this, and integral of this is mu a times mu b. Mu a times mu b is actually mu cross nu star of e. So in this case it will be equal. अगर ना दोनों mu a और mu b finite है तो उस केस में this will be equal to mu cross nu star of e. ठीक, उस केस में होगा. एंड द मैटर ऑफ द फैक्ट इज ये जो दो और केसेस है वहाँ भी यही होगा. बिकॉज वो जो दो और केसेस हैं वेयर म्यू ए इज इन्फिनिटी, एंड एक केस उसमें ये है म्यू ए इज इन्फिनिटी, न्यू बी इज ज़ीरो. दिस इज इन्फिनिटी एंड दिस इज ज़ीरो. द प्रोडक्ट इवेंचुअली विल बी ज़ीरो. सो इन दिस केस द आउटर मेजर इज ज़ीरो. और ये जो फंक्शन आप उस केस में देखेंगे दिस विल बी जीरो फंक्शन, तो इसका इंटीग्रल भी जीरो होगा. सो अगेन वी हैव जीरो इक्वल टू जीरो. सो दिस बेसिकली ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ, दिस होल्ड्स इवन इन दोज टू केसेस ऑल्सो. ठीक है, तो हो गया. सो वी आर डन विद केस वन. केस वन में हमने हर एक चीज़ इस्टेब्लिश कर दी. मेजरेबिलिटी भी आ गई, इंटीग्रेबिलिटी भी आ गई, और फाइनली इंटीग्रल इज इक्वल टू द आउटर मेजर. सो केस वन इज डन. नाउ वी कम टू केस सेकंड. इसको मैं किसी और कलर में लिखूंगा. Case second. In this case we'll be assuming when this E is a sigma set with respect to the product summering. When E is a sigma set with respect to the product summering, which is S O times sigma. Stop. Then तो फिर क्या होगा? Now that it's a sigma set, so you can write this E as a countable union of pairwise disjoint semi-ring members. यही लिख रहा हूँ. Then we can find a sequence. Sequence means a countable collection of pairwise और हाँ वो सीक्वेंस को हम मेंशन पहले ही करेंगे. इस तरह से लिखेंगे हम. वी कैन फाइंड अ सीक्वेंस E sub n running from 1 to infinity of pairwise disjoint semi-ring members, product semi-ring members, S O times sigma members such that E is the union of these ENs. Such that E is equal to union n runs from 1 to infinity E sub n full stop. तो ऐसा किया जा सकता है. ये मैंने कल आपको जब हम वो कल के लेक्चर में जो कुछ ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं वो प्रीलिम सेक्शन में मैंने आपको दिखाया था. इफ द सेट्स आर डिसजॉइंट देयर एक्स सेक्शंस आर आल्सो डिसजॉइंट.
Now these ENs are pairwise disjoint, so the x sections of these ENs will also be pairwise disjoint. मैं पहले इसी चीज को मेंशन कर रहा हूँ यहाँ. Notice that for each x in x, the sequence of x sections of these ENs, that means E sub n, इसको लिखना ऐसे है आपने, इसका ख्याल रखेंगे आप. E sub n, this means the x section of E sub n. N runs from 1 to infinity. This is a sequence. Obviously it's a sequence of pairwise disjoint. यहाँ तक तो ठीक है, pairwise disjoint, because ENs are pairwise disjoint, so the x sections will also be pairwise disjoint. लेकिन मैं इसमें कुछ और ऐड कर रहा हूँ. pairwise disjoint, sorry, pairwise disjoint new measurable सबसेट्स. ये न्यू मेजरेबिलिटी बताइए, इसका रीजन क्या है? ऑफ व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस न्यू मेजरेबिलिटी? हाँ जल्दी. X sections are subsets of Y. हाँ फिर ये कैसे न्यू मेजरेबल होंगे? ये किन के एक्स सेक्शंस आप ले रहे हैं? ENs के, राइट? ENs कहाँ से आ रहे हैं? सेमरिंग मेंबर्स. और इससे पहले मैंने आपको दिखाया ना केस 1 में, जो सेमरिंग मेंबर्स होते हैं इनके जो एक्स सेक्शंस होते हैं, इनके जो एक्स सेक्शंस होते हैं सेमरिंग मेंबर्स के, दे आर न्यू मेजरेबल. यहाँ देखा ना आपने वो. तो वी आर बेसिकली यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन जो हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश करी है. सो दे आर, ये है रीजन ये न्यू मेजरेबिलिटी का. सो दे आर न्यू मेजरेबल सबसेट्स ऑफ वाई. So now since we also know that countable union of measurable sets is a is a measurable set, countable union of measurable sets, since countable union of measurable sets is a measurable set, it follows in view of the observation. और वो observation क्या है? वो ये है, observation, this observation. अगर आप लेंगे, if you take the x section of E, what is this x? ये कोई भी x हो सकता है, वो पहले हमने मेंशन किया है. If you take the x section of E, what will be this? What's E? E is the union, so therefore it will be actually the x section of this union. Union n runs from 1 to infinity. En x section.
और वो जो कल मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, एज पर दैट दिस इज इक्वल टू यूनियन n runs from 1 to infinity x section of the ends. X section of the union is actually union of the x sections, so it's equal to this. और ऊपर आप देख रहे हैं कि these x sections for each x, the x section कहाँ लिखा है वो, ये this is a sequence of new measurable subsets, so these x sections are new measurable. Now this is countable union of new measurable sets, so therefore क्या फॉलो होगा यहाँ, observation this, that this e sub x is a new measurable subset of y, and it is true for all the x's. Again the result is, yeah, no, it's true for all the x's, for all the x's in x. ठीक है. So again we have proved the first part of the conclusion in this case. E sub x's are new measurable. तो मेजरेबिलिटी हो गई. इसमें बस यही तीन चीज़ें आपने दिखानी है. पहले मेजरेबिलिटी, उसके बाद इंटीग्रेबिलिटी, एंड देन द इंटीग्रल ऑफ द आउटर मेजर ऑफ द एक्स सेक्शन आपने दिखाना है कि इट्स इक्वल टू द आउटर मेजर ऑफ ई. और बाय द वे ये चीज़ आपने इस्तेमाल करी है. दिस इज हाउ वी यूज इट टू फाइंड एरियाज ऑफ रीजन्स इन R2. ये असल में वही है जो आपने किया है वहाँ क्वाड्रेचर में. ये उसी का एब्स्ट्रैक्ट एनालॉग है ये. ठीक है. सो मेजरेबिलिटी हो गई. नाउ वी कम टू दी इंटीग्रेबिलिटी. और यहाँ इंटीग्रेबिलिटी डायरेक्टली एस्टेब्लिश नहीं होगी. यू हैव टू यूज सम टूल्स. आई विल बी यूजिंग द लेवेज थ्योरम एक्चुअली. Next, for each, ये आपने आपको ये समझ आया होगा. हर एक केस में आपने बेसिकली तीन चीज़ें एस्टेब्लिश करनी है. पहले मेजरेबिलिटी, उसके बाद इंटीग्रेबिलिटी, एंड देन यू नीड टू शो दैट इंटीग्रल इज द आउटर मेजर. ये तीन चीज़ें हर एक केस में आपने अकॉम्प्लिश करनी है. ठीक. केस 1 में हमने ये पहले तीनों चीज़ें करी है. अब केस 2 में फ़िलहाल के लिए मेजरेबिलिटी हो गई. अब जो नेक्स्ट चीज़ है इट इज़ इंटीग्रेबिलिटी. For each n in the set of natural numbers, अब क्या करिए, we define f sub n. So कैसे आप डिफाइन करेंगे? डिफाइन f sub n as new star of the x section of e sub n. So first you need to consider e sub n, और उस e sub n का x section आप लेंगे और उस x section का new star. ठीक. This is a function of x, and this function of x we are denoting by f sub n. Now again by case 1 अगर आप देखेंगे, case 1 में हमने देखा है कि that since the result is true for case 1 में ना हमने establish किया है result को for simmering members. Now these e sub n's, they are simmering members. So for e sub n's the result is true. Result is true means all the three parts of the result are valid for
Semmering members. So in particular, the second part is valid. A second part in the conclusion holds for Semmering members. Now E sub n is a Semmering member. Second part means E sub n का जो x section होगा, x section का जो new star होगा, that will be integrable. So that means जो ये fn है, जो मैं यहाँ define कर रहा हूँ, it will be an integrable function. Stop. In this way, या क्यों ना हम इसमें ऐसा करें वॉइस, because eventually I have to grow up to अब थोड़ी सी मॉडिफिके, अदरवाइज मुझे ना यहाँ फिर से एक और सीक्वेंस डिफाइन करनी थी, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसी में वो आइडिया भी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, बट यहाँ मुझे थोड़ी सी मॉडरेशन करनी होगी फिर. या तो सिचुएशन इस तरह से पहले ये एफएन्स आप क्रिएट करेंगे एंड देन यूजिंग दीज एफएन्स यू क्रिएट अनदर सीक्वेंस, और उस सीक्वेंस पे फिर लेविस थ्योरम एप्लीकेबल होगी. या हम ऐसा करेंगे, यही थोड़ी सी और ज़्यादा मॉडरेशन करके मतलब हम इसी एफएन्स को ही ना, ये जो सीक्वेंस एफएन है इसी को will make this fn, this sequence fn, the sequence for which Levi's theorem is applicable. और मैं बेख्याल से वही करूँगा यहाँ, वही सही रहेगा. So you define fn as nu star e sub I, where this I runs from 1 to n, and you have to take the summation. This is summation here. Summation I runs from 1 to n, nu star e sub I x. Now, nu star e sub I x is an integrable function by case 1. So this is finite sum. I runs from 1 to n means finite sum. And finite sum of integrable functions is an integrable function. So that means this sequence fn is a sequence of integrable functions. मैं यही लिख रहा हूँ. In this way, we get a sequence fn and running from 1 to infinity of integrable functions. ठीक है. With अब इस सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन में देखिए देयर आर सम सर्टेन प्रॉपर्टीज, वही मैं आप यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ. विद पहली प्रॉपर्टी fn, it will be less than or equal fn plus 1, and this is true for all the n's. ये आप easily देख सकते हैं वहाँ, because fn is I runs from 1 to n, fn plus 1 will be I runs from 1 to n plus 1, तो उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा होगी. सो fn is less or equal to fn plus 1. Second, सेकेंड के लिए आप क्या करिए, यू डू दिस, यू ऑब्जर्व दिस लिमिट. मैंने पहले ही आपसे कहा एफ एन्स आर इंटीग्रेबल, सो आई कैन स्पीक अबाउट द इंटीग्रल्स. वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द लिमिट ऑफ द इंटीग्रल्स. बाय द वे दिस लिमिट एग्जिस्ट्स. क्यों? बिकॉज एफ एन्स आर इंक्रीजिंग, सो देयर फॉर द इंटीग्रल्स विल बी इंक्रीजिंग. सो द सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रल्स इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ लिमिट. मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ कि द लिमिट इज़ फाइनाइट. And therefore we can then use the Levi's theorem, because Levi's theorem के लिए the limit has to be finite. The limit n goes to infinity, integral over x अब ये समझ रहा है मैं ये इंटीग्रल और x क्यों ले रहा हूँ, because these fn's are integrable functions over the measure space x is mu. को लिखिएगा पे वहाँ. This way we get a sequence this of integrable functions
इसको यहाँ लिखेंगे आप ओवर एक्सिस में। वो जो इनकी डिस्क्रिप्शन है ना एफएन्स की, वहाँ से दिस इज एविडेंट दैट दे आर इंडीड फंक्शंस ओवर एक्सिस में। अब लिमिट n goes to infinity integral over x fn d mu. Now we'll examine this. लिमिट हम ऐसे ही रखेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे. We'll first consider the integral. So that's integral over x. What is fn? Fn is the finite sum. It is summation I runs from 1 to n nu star of the x section of e sub I, right? D mu. Now using the linearity, because it's a finite sum, it's integral of finite sum, and using the linearity it will be what? Limit फिलहाल ऐसे ही है, limit को हम कुछ नहीं कर रहे अभी. We are not going into the limit as of now. फिलहाल ये integral को हम, अब यहाँ मैं integral की linearity इस्तेमाल करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ, summation I runs from 1 to n integral over x nu star of the x section of e sub I d mu. ठीक है. Now what is nu star of the x section of I sub I integral when integrated over x? Well, by case 1 we know that it is, because again E sub I is a semi-ring member and semi-ring members के लिए result has been established. So by case 1 this integral will be actually outer measure of E sub I. ठीक है. So this is equal to limit n goes to infinity summation I runs from 1 to n. It will be mu cross nu star of E sub I. This is by case 1 because result is true for semi-ring members. E sub I is a semi-ring member, so using the third part of the result I can conclude that the integral is this mu star. Is this outer measure, not mu star, is the outer measure mu cross nu star E sub I. ठीक है. Now we'll go for the limit. This is summation I runs from 1 to n goes to infinity, so therefore it's actually summation I runs from 1 to infinity mu cross nu star of E sub I. And I can write this as, और इसका reason आप मुझे बताएंगे, I can write this as mu cross nu star of the union I runs from 1 to infinity E sub I. क्या reason है इसका? The reason is additivity. देखिए, your EIs are semi-ring members. Semi-ring members are measurable. And they are pairwise disjoint also. So I can use the additivity. So I can write this summation like this. Now what is union of EIs? That's E. Okay, so this is actually outer measure of E, and outer measure of E by our assumption is finite. So therefore the limit is finite. This is mu cross nu star of E, and this by our assumption is finite. So that means the limit of the integrals is finite, so Levy's theorem is applicable. Full stop. Therefore by the Levy's theorem क्या होगा? By the Levy's theorem there is an integrable function and we can commute integral and हाँ, तो पहली चीज जो लेवी थ्योरम को ऑफर करेगी वो ये है कि दैट द लिमिट ऑफ fn's is integrable, because जो आप कह रहे हैं there is an integrable function, that integrable function is eventually going to be the limit of fn's. ठीक है ना? So by Levy's theorem the limit of fn's is integrable.
हम दोनों चीज़ें यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं. लेविस ऑफ थ्योरम ऑफर्स टू थिंग्स और दोनों का इस्तेमाल होगा. लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी एफ एन, और ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू लिमिट व्हाट इज एफ एन गोज टू इन्फिनिटी. एफ एन इज समेशन I runs from 1 to n nu star e sub I x. ठीक है ना, ये है आपका एफ एन, समेशन आई रन फ्रॉम 1 to n, and I can write this as summation because it's a positive term series, so it is same as this is n limit of the nth partial sum. अगर आप ये सीरीज को देखेंगे, आई रन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी न्यू स्टार ई सब आई एक्स, ये जो फाइनाइट सम है ये इस सीरीज का nth पार्शियल सम है और इसकी लिमिट है. एंड लिमिट ऑफ द nth पार्शियल सम इन केस ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज इज लिमिट. चाहे लिमिट फाइनाइट हो या इन्फिनाइट हो, बट ये है कि इस केस में लिमिट एग्जिस्ट्स फाइनाइटली और इन्फिनाइटली, द लिमिट एग्जिस्ट्स. सो आई कैन टेक दिस ना लिबर्टी ऑफ राइटिंग दिस लिमिट लाइक दिस. और बाय द वे यहाँ दिस लिमिट विल बी फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक्चुअली. वो कैसे, वो थोड़ी देर में आप देखेंगे. So first I can write this limit like this. This is summation I runs from 1 to n goes to infinity, so I can write it like this. हालांकि डायरेक्टली यहाँ नहीं होता है, यहाँ भी कुछ अपने टेक्निकलिटीज़ का. यू कैनॉट ऑलवेज राइट दिस लाइक दिस. हाँ, यहाँ लिखा जा सकता है बिकॉज ये जो टर्म्स है दीज आर ऑल नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज, तो इनके लिए ऐसा किया जा सकता है, बट नॉट ऑलवेज. समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो है ना समेशन आई रन फ्रॉम 1 to n एन गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ इसको आप लिख सकते हैं समेशन आई रन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी बिकॉज दीज टर्म्स जिनके साथ आप डील कर रहे हैं दे आर नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज. And this is the reason that this can be done. But in general, it may not be true. Because in general, this sum may not make any sense. ठीक है? There are series जिनके लिए this sum makes no sense. For example, if you take अगर आप इस तरह से कहते, if you take un as -1 raise n, what will be summation un? Does it make any sense? If un is this does not make any sense. You cannot assign a number to this. और ये समझ रहे होंगे आप क्यों, क्योंकि पहले -1 आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद फिर से -1. तो जब आप पार्शियल सम्स में जाएंगे, जो पार्शियल सम्स है या तो वो 0 होगा या होगा -1, है ना, और कोई सूरत नहीं है. सो ये जो पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस होगी यहाँ, दैट विल बी ऑसिलेटिंग, तो इवेंचुअली कोई लिमिट नहीं होगी. तो उस केस में आप ये नहीं कर सकते. यू कैनॉट, मतलब यहाँ आप ये नहीं कर सकते. इफ दिस बी यू एन, यू कैनॉट से दैट लिमिट n goes to infinity summation I runs from 1 to n ui is equal to summation you cannot say that this limit is equal to summation I runs from 1 to infinity ui, because this does not make any sense. सो ये किया जा सकता है. अब यहाँ फर्दर आप देखिए, ये जो इन्फिनिट सम है मैं उसको लिख सकता हूँ एज, और इसका रीज़न मैं आपसे जानना चाहूँगा. दिस इज सेम एज न्यू स्टार ऑफ यूनियन
I runs from 1 to infinity e sub I x सेक्शन. बताइए रीज़न क्या है इसका. द रीज़न इज़ अगेन एडिटिविटी. मैंने ही पहले ही पॉइंट आउट करके रखा है ऊपर. कहाँ गया. ये देखिए आप यहाँ. The sequence of x sections is what? It's a sequence of pairwise disjoint new measurable subsets. So pairwise disjointness भी है और measurability भी है x sections में. So we can use additivity for x sections. और यहाँ मैं वही कर रहा हूँ. ठीक है. अब ये भी मैंने कंप्यूट करके रखा है. यूनियन ऑफ x sections. इनफैक्ट वो कल वाली एक्सरसाइज इस्तेमाल करके you can see that this is actually x section of the union. Union of EIs is E. So this is actually x section of E. So this is actually nu star of x section of E. So there, that means nu star of the x section of E is this limit of fn's, है ना, equality है ना. So limit of fn's is actually nu star of x sections of E. Now by Levy's theorem, limit of fn's is integrable. So that means nu star of the x section of E is an integrable function because it's equal to limit, and limit by Levy's theorem is integrable. Follows by this, equal to this. Is an integrable function. Is an integrable function over major space X mu. ठीक. Now that it's integrable, so I can speak about the integral further. Integral over x nu star e sub x d mu. This is equal to what? वो ऊपर अभी आप देख रहे थे. This nu star e sub x is actually limit of fn, so I can write this as limit n goes to infinity fn d mu. Now by Levy's theorem I can take the limit outside the integral. This is limit n goes to infinity integral over x fn d mu. और ये लिमिट हमने ऑलरेडी कंप्यूट करी है. हमें दोबारा वो कंप्यूटेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है. लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ओवर x एफ एन डी म्यू हमने यहाँ ऑलरेडी कंप्यूट करी है. हमने ये देखा है कि दैट इट इज़ इक्वल म्यू क्रॉस न्यू स्टार ऑफ ई. दिस इज इक्वल टू म्यू क्रॉस न्यू star of E. So that means what? The result holds for in this case also. तीनों चीज़ें हो गई. पहले measurability of the x section, वो यहाँ हमने conclude किया था. E sub x is new measurable. उसके बाद integrability. integrability के लिए हमने Levy's theorem का इस्तेमाल किया था. Is an integrable function. और finally integral is the outer measure. तीनों चीज़ें होगी. So theorem is true. So case 1 में भी case 2 में भी है जो theorem है it's true. Now we come to case 3. Case 3 is when this E can be written, and E can be written as a countable intersection of
written as a countable intersection of sigma sets with respect to the product summering S O times sigma. ठीक है? And E can be written as a countable intersection of sigma sets with respect to this product summering. So in that case, in this case, then we can find a sequence. Countable intersection means sequence. Then we can find a sequence E sub n running from 1 to infinity of sigma sets with respect to the product summering such that E is the intersection of ENs. E is intersection n runs from 1 to infinity En. Full stop. ठीक है? अब यहाँ एक्चुअली वी वोंट वर्क विद दिस सीक्वेंस En, हम पहले विल क्रिएट अनदर सीक्वेंस और हम उसी के साथ काम करेंगे. For each n in the set of natural numbers, we define g sub n. और ये g sub n कैसे आप डिफाइन करेंगे? Define it like this. We are defining g sub n, right? So it will be equal intersection I runs from 1 to n e sub I. ठीक है? ये हम कर रहे हैं. Then, now what can you tell me about these g sub n's? This is a sequence of, what is g sub n? It's a finite intersection of ei's. What are ei's? Sigma sets. वो कल मैंने आपको बताया था. Finite intersection of sigma sets is a sigma set. So each g sub n is a sigma set. So this is a sequence of sigma sets with respect to the product summering SO times sigma such that इस सीक्वेंस में, ये जो नई सीक्वेंस है GN सीक्वेंस, इसमें आप देखिए इसमें दो चीज़ें होंगी. पहली चीज़ तो ये है, ये दिस इज ओबियस, ये तो होना ही होना चाहिए. इफ़ यू टेक GN एंड इफ यू कंपेयर इट विद GN plus 1, what will be the relation? बताइए. Gn contains Gn plus 1. It contains GN plus 1, exactly. This will be the relation, and this will be true for all n's in the set of natural numbers. And if I take the intersection of all the GNs, what will be this? इसको देखना भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है. आप क्या करिए, अब पहले ये देखिए, व्हाट इज G1. ये जो GN की जो डिस्क्रिप्शन है इसको जहन में रखिए और मुझे बताइए व्हाट इज G1. वेल, G1 विल बी सेम एज E1. व्हाट इज G2? G2 will be intersection I runs from 1 to 2, so it will be in E1 intersected with E2. G3 will be E1 intersected with E2 intersected with E3 and so on. ठीक है? Now if you take intersection of first two GIs, मतलब if you take G1 intersection G2, the answer will be same as
E1 intersected with E2. आप देखिए, intersection of first two GIs is same as intersection of first two EIs. Now if we take intersection of first three GIs, मतलब G1, G2, G3 इनका intersection, it will be, जब आप यहाँ से examine करेंगे, it will be actually E1 intersection E2 intersection E3. And ये चीज़ जो है ना, ये this will, ये आप हमेशा इसमें आप observe करेंगे. That means intersection of first n GIs will be same as intersection of first n EIs. So that is the reason this intersection of all the GIs is same as intersection of all the EIs. As far as the intersection is concerned, it will be same as intersection of all the EIs. That is intersection n runs from 1 to infinity, En. And this intersection, we know that it's equal to E by our assumption. This is E. ठीक? So the moral of the story is, from this sequence I have created another sequence. From the sequence En I have created another sequence Gn with the same properties. जो properties En में है, En sequence में है, वही properties Gn sequence में भी है ना? En is a sequence of sigma sets. Gn is a sequence of sigma sets. Intersection of Ens is E. Intersection of Gn's is also E. But there is a strong reason to prefer these Gn's over Ens. वो reason आप बता सकते क्या है? Decreasing. हाँ, Gn's की जो sequence है, it's a decreasing sequence. And this is the reason we'll work with these Gn's, not with Ens. Full stop. इसके बाद आप क्या करिए, for each n, नहीं, for already हमने लिखा है ऐसे ही, तो यहाँ कुछ और तरीके से लिखेंगे. Next, consider a sequence Gn n running from 1 to infinity consider a sequence this, where Gn is defined as nu star of G sub n x section. Now what can you tell me about these GNs? Little GNs. Capital GNs, we know that they are sigma sets. So the outer measures
of the x sections of capital GNs they will be actually integrable functions by case second. So these GNs are actually integrable functions. Where GN is defined like this. और हाँ यहाँ ये x मैं लिख रहा हूँ तो आई शुड ये थोड़ी सी ना यहाँ एक चूक हो रही है मुझसे क्योंकि वहाँ से x है ना लेफ़्ट साइड से राइट साइड सॉरी राइट साइड से x है और लेफ़्ट साइड में कुछ ही नहीं है. पहले वो मैं लिखूँगा ये. इट्स एक्चुअली मैं आपको ये पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ इसकी. हालांकि वहाँ भी आइडिया तो कम्युनिकेट हो रहा था लेकिन लिखने का तरीका सही नहीं है. gn(x) हम ऐसे इसको लिखेंगे इज डिफाइंड एज, मैं इसकी ना इस फंक्शन की पॉइंट वाइज इवैल्यूएशन आपको बता रहा हूँ. is defined like this for all x is in x and for all n's in n. अब ठीक है सारा. Full stop. You consider the sequence. Now if you use case second, from case second you can easily see that these GNs are integrable functions. Clearly by case second Gn n running from 1 to infinity is a sequence of integrable functions it's a sequence of integrable functions over major space x is mu. ठीक है. It's a sequence of integrable functions. इसके बाद आप जो है ना इस तरह से इसमें करेंगे. फर्स्ट विल कंसिडर दिस नाउ. मेरे ख्याल से ये आप देखिए क्या लिखा था हमने. ऐसे लिखिएगा आप. नाउ कंसिडर दिस द x सेक्शन ऑफ e sub x. ठीक है. दिस इज इक्वल well e sub x जो है we know that it's intersection of gns capital Gn, so it's equal intersection n runs from 1 to infinity gn और इसी इंटरसेक्शन का आपने x सेक्शन लेना है. and what is this? This is intersection x section of intersection, so therefore it will be intersection of x sections. यह x section of the intersection, so it will be intersection of x sections, so it will be intersection n runs from 1 to infinity
GN X सेक्शन. यहाँ आप इस तरह से लिखेंगे. Now since this is equal to this is equal to this, so again by case second it follows by case second. क्या फॉलो होगा केस सेकंड से? केस सेकंड में हमने रिजल्ट को एस्टैब्लिश किया है फॉर sigma sets. GNs are sigma sets, so the X sections of GNs will be measurable sets. So this is intersection of measurable sets, countable intersection. So therefore it will be a measurable set. So therefore E sub X is a measurable set. It follows by case second that this X section of E is a measurable set. For all x's in X. ठीक है. सो मेजरेबिलिटी हो गई. अब हम इंटीग्रेबिलिटी की ओर आएंगे. all x's in X. Further, examine the integral of gn, क्योंकि वो इंटीग्रेबिलिटी उनकी ऑलरेडी हमने एस्टैब्लिश करी है. We have already established that these little gns are integrable functions, so now I can integrate them. I'll examine integral over x gn d mu. कोई n लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग जो g है उसका इंटीग्रल आप एग्जामिन करिए. व्हाट इज दिस? gn is equal to this. ठीक है ना? So integral gn will be integral over x nu star of the x section of capital Gn. ठीक है? d mu. And again by case second, this is what? This will be mu cross nu star of Gn, because Gn is a sigma set and result is true for sigma, so it will be equal to this. ठीक है? Now what next? And by the way, you observe this is true for all the n's. This is true for all the n's in the set of natural numbers. अच्छा, यहाँ कोई भी n नहीं इसमें ले सकते थे. Therefore, what will be the limit of these integrals? Limit n goes to infinity, integral over x g n d mu. This will be limit n goes to infinity mu cross nu star gn, because integral is equal to mu cross nu star, so limit of integrals will be this. अब यहाँ आप क्या करेंगे? कौन सा रिजल्ट यहाँ एप्लीकेबल है मुझे बताइए.
gn जो है they are decreasing. So we'll use the inner limiting theorem here. Inner limiting theorem for the product measure. Inner limiting theorem जो है ना, it's true for every measure. So in particular it's true for the product measure. So we'll use inner limiting theorem for the product measure. So what will be this? By inner limiting theorem this will be, and inner limiting theorem is applicable. वो वेरिफिकेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. आपको बस एक चीज़ इंश्योर करनी है कि दैट म्यू क्रॉस न्यू स्टार ऑफ G1 जो है उसका जो म्यू क्रॉस न्यू स्टार है इट हैज़ टू बी फाइनाइट. और वो होगा. क्यों होगा? बिकॉज G1 इज़ अ पार्ट ऑफ E का म्यू क्रॉस न्यू स्टार जो है वो फाइनाइट है, तो G1 का भी म्यू क्रॉस न्यू स्टार जो है वो फाइनाइट होगा. So inner limiting theorem is applicable, and by inner limiting theorem this is equal mu cross nu star of, you can take the limit inside the sorry ये हाँ मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ इसको. This is equal to mu cross nu star limit n goes to infinity Gn, which is same as mu cross nu star, and intersection of Gn's limit of Gn's is actually intersection of Gn, so it is actually intersection n runs from 1 to infinity Gn. This is the inner limiting theorem, and this is what this is equal to mu cross nu star of, because the intersection is actually E. ठीक है? So we have this. So the limit, and this by our assumption is a finite quantity. ठीक है? So limit of the integrals of Gn's is a finite quantity. अब एक मिनट ऐसे रहेगा, मैं खिड़की बंद करूँ, ऐसे शोर आ रहा है. So the limit of the integrals of Gn's is a finite quantity. एक और चीज़ आप देखिए, ये जो Gn's है जिस तरह से हम इनको ना डिफाइन कर रहे हैं, Gn is this, जो डिस्क्रिप्शन है Gn की, it is nu star of the x section of Gn, capital Gn. Capital Gn's, they are decreasing. So we expect the x sections to be decreasing also. Actually ऐसे है, Gn is containing Gn plus 1. So the x section of Gn, it will contain the x section of Gn plus 1. ये होगा, you can easily see this. ठीक है? Because if some point is here, यहाँ आने का मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर x, y विल बी इन Gn plus 1, और अगर वो Gn plus 1 में होगा वो Gn में भी होगा, बिकॉज Gn plus 1 इज कंटेनड इन Gn. तो दैट मीन्स वो y फिर यहाँ इसके x सेक्शन में होगा. सो इफ y इज हेयर तो y यहाँ भी होगा. सो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू शो. Now using the monotonicity of nu star, you can see that nu star of Gn x is greater or equal to nu star of Gn plus 1 x. है ना? This is little gn and this is little gn plus 1. So the sequence of gn's is decreasing. So it's a decreasing sequence. Levy's theorem जो है ना, we use Levy's theorem for increasing sequences.
बट दैट इज़ नॉट एन इशू. हम उसको ना वी कैन ना मॉडिफाई दिस. इफ जी एन्स आर डिक्रीजिंग, माइनस जी एन्स क्या होंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. सो माइनस जी एन्स विल इंक्रीज and minus gns will remain integrable because gns are integrable. And what will be the limit of integrals of minus gns? We have computed the limit of the integrals of gns, और वो हमने देखा कि that limit of the integrals of gns is finite. So that means limit of the integrals of minus gns will also be finite. So Levy's theorem is still applicable. So we'll use Levy's theorem. ठीक है. लिमिट ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ जी एन इज फाइनाइट. डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकती, बट हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इसको अप्लाई करना है. इट इज़ एप्लीकेबल एक्चुअली. असल में ये इंपॉर्टेंट रहता है लेविस थ्योरम के लिए. लिमिट ऑफ द इंटीग्रल्स शुड बी फाइनाइट. और अब चूंकि ये चीज़ हो रही है, सो वी कैन यूज द लेविस थ्योरम. यहाँ बेसिकली लेविस थ्योरम अप्लाई होगी फॉर माइनस जी एन, बट वो जो रिजल्ट मिलेगा वहाँ से लेविस थ्योरम से, जो लेविस थ्योरम जो हमें ऑफर करेगी, और उसको हम मॉडरेट करेंगे और उसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ जी एन. मैं अब वही कर रहा हूँ. So consequently, by the Levy's theorem, Levy's theorem again, it will offer two things. पहली चीज, limit n goes to infinity, gn is an integrable function, is a mu integrable function, full stop. That is, now what is the limit of gn? अब मुझे बताइए ये. What is the limit of gns? Little gns की जो लिमिट है, what is the limit? कहाँ है gn? कहाँ हमने डिफाइन किया है? ये है gn. What will be the limit of gns? His theorem says that this is integrable. Limit n goes to infinity, gn is integrable, mu integrable. But this is same as limit n goes to infinity, nu star of the x section of gn. राइट. यहाँ फिर से हम इनर लिमिटिंग थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे. जी एन्स आर डिक्रीजिंग, सो विल बी द एक्स सेक्शंस ऑफ जी एन्स, एंड जी एन्स आर सिग्मा सेट्स. बाय केस 2, एक्स सेक्शंस ऑफ सिग्मा सेट्स आर मेजरेबल सेट्स. सो एक्स सेक्शंस विल बी मेजरेबल एंड डिक्रीजिंग. ठीक है ना? सो आई कैन यूज द inner limiting theorem. So by inner limiting theorem, this is equal to, I can take limit inside, and taking limit inside actually amounts to taking nu star of the intersection. So it will be actually nu star of intersection. So n runs from 1 to infinity. gn इसका x सेक्शन और फिर उस पे न्यू स्टार. ठीक है.
हाँ एक्चुअली ये पहले ऐसे आता है ना, अगर देखा जाए तो पहले स्टेप में ये आता है, इट वुड हैव बीन द इंटरसेक्शन ऑफ द x sections, but intersection of x sections is same as x section of the intersection. मैं यहाँ ना दो steps को club करके ही लिख रहा हूँ. What is this? What is intersection of g and that's e? So that means nu star of e sub x, because intersection of g ends is e. Intersection of g ends is e. This is x section of the intersection, so therefore it's actually x section of e. So nu star of the x section of e, which is equal to this, और ये ऊपर आपने देखा is integrable, so it's an integrable function, is a mu integrable function. Is a mu integrable function. Full stop. ये काफ़ी है इतना. मैं नया पेज स्टार्ट कर रहा हूँ, लैग हो रहा है. This is a mu integrable function. Also, now that it is mu integrable, so I can integrate it. Integral over x nu star e sub x. अभी आप देख रहे थे, this nu star e sub x is actually limit of gn. So this is integral over x limit n goes to infinity gn d mu, right? And by Levy's theorem ये लिमिट को बाहर निकाला जा सकता है. So this limit n goes to infinity integral over x gn d mu, और ये लिमिट हमने ऑलरेडी एवेलुएट करी है. वी डोंट नीड टू हमें दोबारा ये कैलकुलेशन से जाने की जरूरत नहीं है. वी नो दैट लिमिट n goes to infinity integral over x gn d mu is eventually equal mu cross nu star of e. Is equal mu cross nu star of e. ठीक है, मेजरेबिलिटी भी हो गई, इंटीग्रेबिलिटी भी हो गई, और इंटीग्रल इज द आउटर मेजर ये भी हो गया. सो द थियरम इज ट्रू फॉर these sets also. It's true for sets which can be written as countable intersection of sigma sets. So this proves the result for case 3 also. Yeah, in case 3 also. हमने मेजरेबिलिटी कहाँ एस्टैब्लिश करी थी? यहाँ मेजरेबिलिटी, फिर इसके बाद इंटीग्रेबिलिटी. हाँ, तीनों चीज़ें हो गई. कोई चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए. ये लेंथी प्रूफ है, तो यहाँ इंसान ना ये गलती कर सकता है. बस ये तीन चीज़ों का ख्याल रखें. हर एक केस में ये तीन चीज़ें आपने एस्टैब्लिश करनी है. नाउ वी कम टू केस 4. Case 4, when the set E is a null set. Null set आप समझते हैं ना? Set with outer measure 0. And E is a null set. अब हम वो कल जो लेमा मैं आपसे कह रहा था इसमें इस्तेमाल होगी, जिसको हमने फॉर्मली नहीं लिखा है एज ए लेमा, बट विल मेक यूज ऑफ दैट रिजल्ट. तो क्या होगा बताइए? E is a null set, so it's clearly a measurable set. Measure is 0. Every set with measure 0 is a measurable set. And measure 0 means finite also. So that means this E is a measurable set with a finite outer measure. So that result is applicable. By a previous result,
we can find, we can write this E as a countable intersection of, actually not exactly but in terms of measure actually. ठीक है, मैं वो डायरेक्ट ना, वो जो वो रिजल्ट हमें ऑफर करेगा ना, वो चीज़ पहले यहाँ लिख रहा हूँ. वी कैन फाइंड set capital F such that, इस F में देखिए क्या क्या होगा. पहली चीज़, F is a countable intersection of sigma sets with respect to the product summering. एक तो ये होगा, because E is measurable with respect to the measure on the product summering, so there will be a set F which is ये रिजल्ट है. अगर आपने इन केस कल वाली क्लास अटेंड नहीं करी है तो बेसिकली आई एम स्पीकिंग ऑफ दिस रिजल्ट. ये है. If you have a measured space, E is a measurable subset with finite outer measure, then we can always find a G which contains E. G can be written as countable intersection of sigma sets, and measure of G, outer measure of G, will be same as outer measure of E. इसी result का इस्तेमाल हो रहा है. We can find set F such that F is countable intersection of sigma sets with respect to the product summering this. Second, F contains E, and third, the outer measure of F. बट यहाँ ये रिजल्ट जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, इसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर आवर प्रोडक्ट मेजर स्पेस या ऑन आवर प्रोडक्ट मेजर स्पेस. यहाँ मेजर की जगह होगा प्रोडक्ट मेजर. म्यू क्रॉस न्यू स्टार ऑफ F, दिस विल बी सेम एज म्यू क्रॉस न्यू स्टार ऑफ E. और चूंकि आप यहाँ अस्यूम कर रहे हैं E इज अ नल सेट, सो दिस इज 0. ठीक है, तो ये सिनेरियो है अभी. Full stop. Now by the previous case, which is case 3, now by case 3, अब मुझे ये बताइए, if I integrate, by the way integration is possible because F is countable intersection of sigma sets, और इसके लिए result is true. Now if I integrate this, if I integrate the nu star of the x section of F, what will I get? Integration is possible because x section, rather I should say nu star of the x section of F, it will be an integrable function by case 3, so integration is possible. And मुझे क्या मिलेगा if I integrate? वो हम देख सकते हैं using the third part of the theorem, third part in the conclusion, because theorem is true for this F, so it will be equal to actually mu cross, this will be equal to mu cross nu star of F, and mu cross nu star of F is 0. So ये कौन सी situation है फिर? It's a situation where the integral of a non-negative function, nu star is non-negative है ना, nu star of the x section, it's a non-negative function, और इस non-negative function का जो integral है आप देख रहे हैं it's 0, so that means what? That means the integrand must be 0 AE.
So therefore the integrand in the integral, which is nu star f sub x, must be 0 almost everywhere. ठीक है? Also, since E जो है, we know that it's contained in F, so it follows x section of E will be contained in the x section of F, and therefore using the monotonicity of nu star of the x section of E, it will be less than or equal to nu star of the x section of F, and x nu star of the x section of F हमने पहले ही देखा कि it is 0 AE, it is 0 almost everywhere, full stop. Thus now what you conclude from this, यहाँ से हम ये देख रहे हैं nu star of E sub x is less than or equal to 0 almost everywhere, so that means nu star of the x section of E is 0 for almost all x's in X, right? So for almost all x's, these x sections are null sets because nu star is 0, and null sets are measurable. So that means for almost all x's, these x sections are measurable sets. Consequently, for mu almost all x's in X, comma, जो x section है E का, because for almost all x's, nu star x section is 0, so that means for almost all x's, x section is measurable because its outer measure is 0, so it is, this x section is new measurable, is a new measurable subset of y. तो हो गई measurability. Integrability is already established because मैं आपको दिखा रहा हूँ, this function is 0 almost everywhere. 0 function is integrable, so therefore this is integrable. ये मैं लिख रहा हूँ, nu star E sub x being a 0 function, being a 0 function AE is already integrable, is already, so ये हो गई integrability भी, integrable. Now we come to the integration part. Integrable, and what will be the integral? Integral over x nu star E sub x, this will be 0 because the function is 0 AE, and 0 is same as mu cross nu star of E, because in this case E is a null set. So again we have proved the theorem in this case. इस केस में भी हो गया. Now we come to the general case. This is the last case now. Finally, the general case. This is case 5, which is the
general case. So basically यहाँ क्या होगा, यहाँ कोई स्पेशल assumption नहीं लेंगे about the C, जैसा ये है वैसे ही लेंगे. When E is a mu cross nu measurable set with finite outer measure with mu cross nu star E लेस देन इन्फिनिटी. तो फिर से हम वही रिजल्ट जो अभी मैं आपको दिखा रहा था उसी का इस्तेमाल करेंगे. इट्स अ मेजरेबल सेट विद फाइनाइट आउटर मेजर, सो आई कैन फाइंड अ सेट. ठीक है, बट वी हैव टू नाउ बी केयरफुल विद द नोटेशंस. अगेन बाय द प्रीवियस रिजल्ट जिसकी ऊपर हम बात कर रहे थे, बाय द प्रीवियस रिजल्ट या बाय, इस तरह से ही लिखिएगा, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है. ऐसे लिखेंगे अगेन बाय अ प्रीवियस रिजल्ट, और ये बेसिकली मैं उसी रिजल्ट की बात कर रहा हूँ जो ऊपर हमने इस्तेमाल किया था. बाय अ प्रीवियस रिजल्ट वी कैन फाइंड a set H such that पहली चीज, this H will be a countable intersection of sigma sets. H is a countable intersection of sigma sets with respect to the product semi-ring. Second, H will be containing E. And third, the mu cross nu outer measure of H will be same as mu cross nu outer measure of E. ठीक है, तो ये किया जा सकता है. अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पहले एक पिक्चर आप ड्रा करिए इस तरह से. सपोज दिस इज E एंड H जो है इट इज कंटेनिंग E. अब ये जो रिंग शेपेड रीजन है विल टारगेट दिस, इसको हम G से डिनोट करेंगे. अभी लेट कैपिटल G बी इक्वल्ड H माइनस E. रिंग शेपेड रीजन जो ये फिगर में आप देख रहे हैं. आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज H intersected with E complement. Then clearly this G is a measurable set. G is a mu cross nu measurable set. है ना measurable? Because H is measurable. H क्यों है measurable? Because it's countable intersection of sigma sets. Sigma sets are measurable, so countable intersection will be measurable. So H is measurable. E तो already measurable है. और यहाँ से आप देख सकते हैं जो ये G की ये वाली शक्ल है H intersection E complement, यहाँ से आप easily देख सकते हैं G is measurable. It's mu cross nu measurable. Also, अगर आप इसे देखेंगे, if you take mu cross nu star of E plus mu cross nu star of G. अब G आपको पता है G is the ring shaped region. Now G is measurable, E is measurable, G and E are disjoint, so I can use additivity. So this will be equal to mu cross nu of the union E union G. E union G. G by the way is the ring shaped region. This. So and E union G is clearly H. So this is actually mu cross nu
स्टार ऑफ एच. ठीक है, फुल स्टॉप. दिस गिव्स, अब ये क्या देगा आपको, आप क्या करें, यू सब्ट्रैक्ट या you transpose this quantity to the right side, and it is permissible. Why? Because this quantity is a finite quantity, so you can subtract by this quantity and that amounts to transposing. So on subtracting this quantity on both sides क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा mu cross nu star of g is equal to mu cross nu star of h minus mu cross nu star of e. And since mu cross nu star of h and mu cross nu star of e, they are equal, so this is 0. The difference of two equal quantities, so it is 0. So that means G is a null set. So we can use our previous case. G is a null set, so we can use case 4. That is, this capital G is a null set, and therefore by case 4 क्या होगा, इसका जो x section है that will be, therefore by case 4 G sub x, मतलब the x section of G is comma है ये, ठीक है, this is new measurable, this is a new measurable set for almost, in fact I should write for mu almost all x's in x, because ये जो almost everywhereness जो है, it will be with respect to the measure mu, so that is the reason I am writing mu almost all x's in x. ठीक है, और since, अब इसे देखिए आप, ये पिक्चर से ही आपको ना ज़्यादा बेहतर दिखेगा. What is h minus g? अगर h से g रिमूव किया जाए, what is that? h minus g. From the picture you can easily see that it is equal to e. So x section of e will be x section of the difference. ठीक, and this is equal to, ये कल मैंने वो exercise जो आपको दी थी, this is equal to x section of h minus the x section of g. And from this we can conclude that it follows e sub x, the x section of e is new measurable. इसका reason मैं आपसे जानना चाहूँगा. Is new measurable for mu almost all x in x. बताइए, what is the reason? Intersection of two measurables. हाँ, Intersection of two measurables. हाँ, रीजन वही है, तो आप डर डर के क्यों कह रहे हैं? कॉन्फिडेंस के साथ कहिए. h sub x जो है ना, व्हाट इज h?
H ऊपर आप देखिए, इट्स अ काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा सेट्स, and we have examined this scenario in case 3. So by case 3 we can conclude that X section of H is measurable for all x's actually. जो X section है ना H का, it's measurable for all x's. और G जो है, G being a null set, इसका जो X section होगा, it will be measurable for almost all x's. So basically the difference is, यहाँ जो difference है आप देख रहे हैं, it's difference of two measurable sets. मेजरेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, चूंकि ये जी में ये प्रॉब्लम है, जी जो है ना इट इज़ मेजरेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एक्स सेक्शन ऑफ जी रादर. Since difference of two measurable sets is a measurable set, so means E sub x is a measurable set. It's a new measurable set for almost all x's in x. तो ये हो गई measurability. अब इसके बाद आपने क्या दिखानी है, इंटीग्रेबिलिटी. वो कैसे करेंगे? हाँ बताइए. ऑल्सो अगर आप लेंगे न्यू स्टार ऑफ द एक्स सेक्शन ऑफ ई, फिर से आप पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे, प्लस न्यू स्टार ऑफ द एक्स सेक्शन ऑफ जी, व्हाट विल बी दिस? ये आप पहले ऑब्जर्व करिए, सिंस ई एंड जी आर डिसजॉइंट, their x sections will be disjoint also. So these are disjoint sets. X section E and X section G, they are disjoint sets. और ये measurable भी है. Measurability हमने, इसकी measurability हमने केस 4 में establish करी थी, और अभी just now मैंने ये E sub x की measurability establish करी यहाँ. So they are measurable also. So I can use additivity of new star. So therefore it will be also, since this is this plus this is equal, it can be written as new star of x section E union x section G. Now this is union of x sections, and it is same as x section of the union. What is E union G? That's H. So this is same as new star of x section of H. ठीक है. और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन हम ऐड करेंगे, एंड सिंस ये हमने केस 3 में ही देखा था, G इज़ अ नल सेट, और वहाँ आपने देखा जो नल सेट का जो x सेक्शन होता है उसका जो न्यू स्टार होता है इट्स 0. इसी के बेसिस पे आपने बेसिकली ना वो मेजरेबिलिटी एस्टैब्लिश करी थी. एंड सिंस न्यू स्टार G sub x is 0 almost everywhere, it follows what? बताइए. ये हो गया, बस 2 लाइन्स है, 3 लाइन्स है प्रूफ में. इट फॉलोज. आप यहाँ देख रहे हैं दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, और अब नीचे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, दिस इज 0 है, तो मीन्स दिस इज 0 है, सो दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस ए. ये मैं लिख रहा हूँ, न्यू स्टार E sub x is equal to new star A sub x. This is true for almost all x's. A means basically for mu almost all x's and x. ठीक है, तो ये भी हो गया. अब फिर से आप केस 3 इस्तेमाल करेंगे. केस 3 में आप देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है. We know from case 3, this being x section of H is countable intersection of sigma sets
इसका जो x सेक्शन है उसका जो न्यू स्टार होगा, दिस इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन. सिंस दिस इज इक्वल टू दिस AE, so therefore this is an इंटीग्रेबल फंक्शन. Thus by case 3, nu star e sub x, because it's equal to AE to an integrable function, so it must be itself integrable, is a mu integrable function. ये establish हो गई integrability. Now that the integrability is established, so we can speak about the integral. ये बिल्कुल ऐसे इसी सीक्वेंस में करना होता है. मेजरेबिलिटी, उसके बाद इंटीग्रेबिलिटी, उसके बाद इंटीग्रेशन. Now the integrability has been established, so I can speak about the integral. Now integral, ऐसे लिखेंगे अब. Now integral over x nu star of the x section of E d mu. This will be what? Since this function is equal to this AE, so the integrals will be same. Integral over x nu star of h sub x d mu, and h sub x being being countable intersection of sigma sets. तो इसके लिए क्या होगा बेसिकली, इसका जो इंटीग्रल है nu star h sub x, this will be equal by case 3, this will be equal to mu cross nu star of h, and mu cross nu star of h ये ऊपर हमने लिख के रखा है, यहाँ देखिए. mu cross nu star of h is same as mu cross nu star of E. Which is same as mu cross nu star of E, and that proves the theorem completely. अब इसका वो जो दूसरा एनालॉग है फॉर वाई सेक्शंस, वो आप खुद उसका स्टेटमेंट आप खुद फॉर्मुलेट करेंगे, एंड यू ट्राई टू राइट अ प्रूफ फॉर दैट. आपने यही लाइंस को फॉलो करना है, यही लॉजिक को फॉलो करना है. ठीक है, वो मैं देखूंगा आपसे, वो मुझे दिखाइएगा, बिकॉज विल बी यूजिंग बोथ दीज वाइल प्रूविंग द फिबनीज थ्योरम. ये असल में ये सारा हम फिबनीज थ्योरम के लिए कर रहे हैं. इसके बगैर फिबनीज थ्योरम प्रूव नहीं होती है, उसमें ये चीज़ें यूज़ होती है. एंड इसमें ये जो रिज़ल्ट है, इसमें इसकी अपनी भी एक अहमियत है ना, ये आप समझ रहे होंगे, मैंने कल भी आपको बताया था. दिस एक्चुअली टेल्स अस हाउ टू कंप्यूट द आउटर मेजर ऑफ जनरल सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्योंकि कल मैंने आपको ये बताया था, द प्रॉब्लम, द बिगेस्ट हर्डल इन दीज प्रोडक्ट स्पेसेस इज नॉट एवरी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो देयर आर सर्टेन सेट्स जिनको आप एज कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिख सकते, और उनके लिए जो आउटर मेजर की कंप्यूटेशन है, इट बिकम्स चैलेंजिंग. और ये जो थियरम है, इट टेल्स अस हाउ टू कंप्यूट द आउटर मेजर फॉर दो सेट्स. अब यहाँ आप इस थियरम में एक रिस्ट्रिक्शन देख रहे होंगे, म्यू स्टार ई, सॉरी है ना, म्यू क्रॉस न्यू स्टार ई लेस देन इन्फिनिटी, प्रोडक्ट आउटर मेजर लेस देन इन्फिनिटी. एक्चुअली इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज अगर प्रोडक्ट आउटर मेजर इन्फिनिटी है, देन देर इज नथिंग टू कंप्यूट. तो कंप्यूटेशन के लायक कोई चीज़ है ही नहीं. फिर computation is relevant only in those cases where the quantity which you are intending to compute is a finite quantity. तो फिर आप ना then it becomes interesting to know what is the value. अगर infinite है, then we are done, it's infinity, finish. असल जो चैलेंज होता है वो होता है when the quantity जिसको आप कंप्यूट करना चाहते हैं is finite. और उस केस में मैं आपको ये फॉर्मूला दे रहा हूँ, आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके वो कंप्यूट कर सकते हैं. ये अभी के लिए काफ़ी, अब इंशाल्लाह अब शाम को हम मिलेंगे, लेकिन उस टाइम तक ना मैं रैंडमली किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ, और आपके पास वो रेडी होना चाहिए. आपको वो स्क्रीन शेयर करना है और मैं देखूंगा कि आपने क्या लिखा होगा. यू हैव टू फॉर्मुलेट द एनालॉगस रिजल्ट फॉर द वॉइस सेक्शंस.
पहले स्ट्रीमिंग, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। स्ट्रिंग में कोई इशू आ गया है तो आई डोंट नो कि कहाँ तक आई है स्ट्रीमिंग, मुझे नहीं पता। यही नहीं चाहता था मैं। इसमें ज़्यादातर हिस्सा नहीं है जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ।